Hello students, welcome to revision class of SST. So students, today we will discuss types of industries. So there are three types of industry. Firstly based on raw material. तो ऐसी industries जो raw material पे based होती हैं. First one, the A1 is agro based industries. तो ऐसी industries जो plant और animal products होते हैं, जैसे raw material जैसे milk etc. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है agro based industries. ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. तो ऐसी इंडस्ट्री जो कोल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. सी है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो ओशियन का प्रोडक्ट यूज करती हैं, ओशियन सीज और ओशियंस को एज अ रॉ मटेरियल लेती है, उसे क्या कहते हैं? मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है. और लास्ट वन है हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. उसमें क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो वुड का यूज करती हैं, वुड को यूज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो ये हमारे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया जो है हमारा बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइज. तो फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो छोटे स्केल की हैं, जिनके ऊपर कम पैसा लगा है और वो छोटी जगह पे अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, उन्हें कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बड़े स्केल पे, बहुत बड़ी बड़ी जिनकी फैक्ट्रीज है, बड़े स्केल पे काम करती हैं, उन्हें कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. अब देखो थर्ड है हमारी बेस्ड ऑन ओनरशिप. पहली है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जिसका मालिक हो. ठीक है. सेकंड आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट उनका मालिक होती है. सी है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. जॉइंट सेक्टर क्या है? आधी स्टेट ओन करता है और आदि इंडिविजुअल करते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं. लास्ट है हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. वो कौन ओन करता है? वो एक कॉर्पोरेशन ओन करती है और टू और मोर पार्टीज का ओन करती है, मतलब वो उनके मालिक होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो अब हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में. तो ये वीडियो देखिए. Iron and steel industries. Can you think of a machine that is not made of iron or steel? I'm sure that would have been difficult. It is almost impossible to think of machines that are not made of iron and steel. And not just machines, even the things that we use every day, from a tiny pin to a car, and from buildings to bridges. They are all either made of iron and steel or are made using tools and machines which are made of iron or steel. Now, do you know the difference between iron and steel? Yes, iron is a metal. Steel, on the other hand, is a stronger material and is an alloy of iron. It looks something like this. Due to its strength and resistance to corrosion, most industries use steel to make heavy machines and tools. But how is steel made from iron ore? Let's find out. Like any industry, the iron and steel industry has inputs, processes, and outputs. Labor, capital, a manufacturing plant, and raw materials like iron ore, limestone, and coal acts as inputs. These raw materials are put into a blast furnace, which is a tower-shaped pot, and are heated intensely using hot air. Once this process is complete, the product or the output that comes out of the furnace is steel. Due to the availability of iron ore and its physical properties, all types of industries use iron and steel. These two materials have helped us build large cities and machines that allow us to live comfortably. This is why it is said that iron and steel form the backbone of modern civilization. Due to the high demand for these two materials today, you can find iron and steel industries all around the world. But this wasn't an easy journey. Let's see how these industries were built and how they changed locations over the years and why. Before 1800 CE, the iron and steel industry would be located where raw materials, power supply, and running water were easily available. This was mainly because iron ore and coal are bulky raw materials and transporting them would not be easy.
As years passed, people chose to build these industries near coal fields and railway stations because it enabled easy transport. Then, around the 1950s, these industries were built on flat lands close to seaports because people needed to import iron ore from other countries. Now let's see where the iron and steel industries are located in India. In India, iron and steel producing centers are located in the areas where people can find raw materials, cheap labor, transport, and a market easily. The important iron and steel producing areas in India are Bhilai in Chhattisgarh, Durgapur and Burnpur in West Bengal, Jamshedpur and Bokaro in Jharkhand, Rourkela in Odisha, Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Vishakhapatnam in Andhra Pradesh, and Salem in Tamil Nadu. Most of these centers are located in the eastern part of India because iron ore is found abundantly in the region. So we saw how over time the iron and steel industry has become the backbone of modern civilization. We also saw the inputs, processes, and outputs of the industry and how its location has changed over the years. And finally, we learned about all the iron and steel centers located in India. Bye-bye. Happy learning.